ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੀ ਮਿਹਨਤ ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰੋ। ਡੋंट फोकस ऑन द आफ्टर इफेक्ट्स, द व्हाट इफ्स, द आउटकम्स। वो तो फिर लाइफ की नेवर एंडिंग टेंशन है। अगर उधर चले गए, उधर बैठ गए सोचने, तो फिर कोई एंड ही नहीं है। जस्ट फोकस ऑन योर एफर्ट्स। अपनी तरफों ना, वी विल गो थ्रू इट ऑल। वी विल गो थ्रू ऑल द challenges, difficulties and hardships that we might have to face in our life. But while going through it all ना, ਸਾਡੇ अंदर एक hope रहेगी, that everlasting hope, spirit of optimism, of positivity, knowing that we will get through it, we will get out of it, is like a spiritual motivation. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ that no matter how difficult, challenging ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ circumstance ਆ ਜਾਏ where you feeling absolutely confused, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, but even after doing so much, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ that the more we are chasing success, the more we are becoming anxious. ਸਾਨੂੰ सक्सेस मिल रहा है, लोगों को लाइफ में बड़ा कुछ मिल रहा है, बट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट एंड इन स्पाइट ऑल ऑफ दैट ना दिल ਨੂੰ ਸਕੂਨ नहीं है, मन में शांति नहीं है। इन फैक्ट आई वुड इवन से दैट यू आर सक्सेसफुल। जो कुछ लाइफ में चाहिए सी वो सब कुछ मिलते गया है, बट फिर भी पता नहीं क्यों एग्जाइटी जी फील होती है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ समथिंग इज नॉट राइट। एक रेस्टलेसनेस फील होती है, एक क्योस जो फील होता है। सत श्री अकाल एंड हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर इंटरेस्टिंग यूट्यूब वीडियो। आई एम इग्नोर एंड आई एम सो ग्लैड दैट यू फाउंड योरसेल्फ ओवर हियर। सबसे पहले तो आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू कि तुसी सब मेरे चैनल ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਟੌਪਿਕ ਹੋਣੇ ਵਾਲਾ ਹੈ ਸੁਪਰ ਰਿਲੇਟੇਬਲ ਤੇ ਆਲਸੋ ਸੁਪਰ ਹੈਲਪਫੁਲ, ਤੇ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਸਮਥਿੰਗ that we all need to talk about because I am sure ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੋ ਹੀ ਰਹੀਆਂ ਨੇ and everyone is going through the same thought process. Is it happening to you as well that you are successful? ਜੋ ਕੁਝ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਿਲਤੇ ਗਿਆ ਹੈ, बट फिर भी पता नहीं क्यों एग्जाइटी जी फील होती है। देयर इज अ फीलिंग ऑफ समथिंग इज नॉट राइट। एक रेस्टलेसनेस फील होती है, एक क्योस जो फील होता है। तो बट मन ਨੂੰ पता है कि चलो सक्सेस भी मिल गया है, सब कुछ हो गया है, बट somehow still there is no peace. On that note, you found yourself at the right place। चढ़दी कला दी स्पिरिट विच रह के let's begin watching today's video। One advice that anyone and everyone will give you is only one, which is work harder। तो ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਸਭ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਸਵੇਰੇ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਉੱਠ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, you do everything that you have to, want to, need to, ਉਹ सब हो जाता है, बट स्टिल दिल च एंजाइटी है, मन में एक खालीपन है, अजीब सी हैवीनेस फील होती है। पता है क्यों? आज की वीडियो में इसके बारे में तो डेफिनेटली बात करने वाली हूँ, बट पहले मुझे ये बताओ दैट डू यू ऑल्सो रिलेट टू द फैक्ट दैट हम ना वी आर लिविंग इन वन ऑफ द मोस्ट प्रोडक्टिव एजेस एराज एवर, जहाँ पे हर किसी को हासिल करना है, हर किसी दे विच एक गल है, हर किसी ਨੂੰ है कि यार मैं लाइफ विच कुछ बड़ा वड्डा करना है। बट इवन आफ्टर डूइंग सो मच, ये गल क्यों हो रही है दैट द मोर वी आर चेजिंग सक्सेस, द मोर वी आर बिकमिंग एंशियस। ਸਾਨੂੰ सक्सेस मिल रहा है, लोगों को लाइफ में बड़ा कुछ मिल रहा है, बट बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट एंड इन स्पाइट ऑल ऑफ दैट ना दिल ਨੂੰ ਸਕੂਨ नहीं है, मन में शांति नहीं है। In fact, I would even say that people are losing themselves. They're working so hard to build a life. They're working so hard to make a living. But at the end of it all, are they actually even truly living their life? Personally, मैंने तो लगता है most of the people are just existing the false promise of modern hustle. आज की दुनिया ना एक ही आइडिया ते चलती है, which is that you are only successful, you are only valuable if you're constantly growing. If you're growing, that means if you're constantly working. Then we start believing that we also want to be successful, we also want to grow, we also want to constantly work, because तीन चीज़ें तो मैटर करनी हैं, ज़्यादा पैसा, ज़्यादा सक्सेस, तो ज़्यादा फेम। तो what happens is that we work hard, we make our dream life, at least ਅਸੀਂ पूरी कोशिश करने हैं that we make our dreams our reality. But what happens is that एक गोल खत्म होता है तो ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ गोल ਨੂੰ खत्म करने ਚ ਲੱਗ जाने हैं। It's like a finish line is constantly moving, because जैसे ही we get one thing doesn't mean कि हमें सुकून आता है, oh yes ये तो मिल गया। नहीं, हमें तो स्ट्रेस हो जाता है कि चलो ये हो गया, मतलब मुझे नेक्स्ट ये चाहिए। हार्डली हम कभी टाइम निकाल के अपने आप में या मन में ये सोचते हैं ओ वाओ आई हैव अचीव्ड दिस, आई वाज वर्किंग हार्ड टू गेट टिल हियर। वाओ नहीं, द मोमेंट यू अचीव गोल 1 ਤੁਹਾਨੂੰ गोल 2 ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਆਫਟਰ दैट इट्स नेवर एंडिंग, बिकॉज असल इच वी आर ऑल चेजिंग अ फिनिश लाइन दैट कीप्स ऑन चेंजिंग। 100 मीटर रेस है, उसके बाद 200, 500, कोई एंड ही नहीं है। इसीलिए तो हमें सब मिलके भी लगता है कि कुछ मिला ही नहीं है। अब दुनिया वालों की नजरों में दे माइट थिंक ओ दिस पर्सन इज सो सक्सेसफुल, ओ शी नोज एग्जैक्टली व्हाट शी इज डूइंग, बट अंदरों ਤੁਹਾਨੂੰ पता है ਤੁਸੀਂ स्ट्रगल कर रहे हो, एंड एक्चुअली यू माइट फील कि ओ I don't think I'm that successful in life. Oh, you know, people my age are doing so much better. Oh no, मुझे अब तक ये सब कर लेना था।
आपके ये जो थॉट्स है ये सिर्फ आपके साथ नहीं हो रहा, दिस इज हैपनिंग टू अ लॉट ऑफ पीपल गाइस, बिकॉज दिस इज अ सिस्टम ऑफ साइलेंट एंजाइटी जो आजकल की सोसाइटी क्रिएट कर रही है। इस बात की एंजाइटी की कहीं मैं पीछे ना रह जाऊं, इस बात की एंजाइटी की कहीं किसी को वो ना मिल जाए जिसके लिए मैं काम कर रही हूँ। इससे क्या होता है, हम काम तो बड़ा करते हैं, हम मेहनत तो बड़ी करते हैं, पर इतना कुछ करके भी ना दिल में वो सुकून आ ही नहीं पाता, बिकॉज कॉन्स्टेंटली वो डर सा लगा रहता है दैट व्हाट इफ आई एम नॉट डूइंग इनफ, एंड इन स्पाइट ऑफ डूइंग मोर देन इनफ यू विल लूज योर सेल्फ, बिकॉज तुझसे अपने आप को टाइम ही नहीं दे रहे हो। द एंजाइटी दैट इज इफेक्टिंग दिस जनरेशन, एज आई टोल्ड यू ऑल अभी ऑल्सो ना, कि हम एक ऐसी एज में रह रहे हैं, एक ऐसी जनरेशन में रह रहे हैं जहां हर कोई भाग रहा है कि यार मुझे ये चाहिए, वो भी चाहिए, ए भी चाहिए, बट नोबडी इज एक्चुअली टेकिंग आउट टाइम to actually enjoy and understand and realize कि life में हो कुछ की रहा है, what is even happening, what have you won in life, what have you lost in life। they actually एक बहुत बड़ी बात बोलने वाली हूँ यहाँ पे, that if what you are working towards is even worth it or not, क्योंकि जब तुसी रेस्ट भी कर रहे हो ना, your mind is actually not relaxed or resting, it's actually feeling guilty कि लोड़ है, जाके कम करना चाहिए, आई शुड बी डूइंग दिस, मेरे को क्या जरूरत है ये करने की, एंड ठीक है आप अपने को कितना भी कन्विंस कर लो ना, नहीं यार मैं इतना रिलैक्स्ड हूँ, नहीं होते आप, मन ही मन में यू आर फीलिंग वेरी गिल्टी, वेरी एंशियस। आप इनफैक्ट अगर किसी का वीडियो भी देख रहे हो ना, आपको यही लगता है यार इसके पास मतलब ये सब है, मैं इसको देख के अपना व्यू बढ़ा रही हूँ, इसका व्यू दे रही हूँ, मुझे क्या जरूरत है, आई शुड गो एंड वर्क ऑन माई लाइफ, एंड व्हाट हैपेंस, यू गो, यू वर्क हार्ड ऑन योर लाइफ, एंड देयर आर मोमेंट्स व्हेन यू आर एक्चुअली विनिंग इन लाइफ, तो जो कुछ चाहिए सी वो सब मिल भी रहा है, बट देन यू आर अगेन फीलिंग गिल्टी। अब इस बात का गिल्ट है कि यार हाँ मैं इधर तक तो आ गई, पर मेरे आसपास जो लोग इधर तक आए हैं वो कहीं मेरे से आगे चले गए और मैं यहीं की यहीं रह गई, तो वो डर है ना गाइस, इट्स नेवर एक्चुअली लीविंग अस, एंड दैट्स नॉट फियर, दैट्स एक्चुअली द एंजाइटी ऑफ दिस जनरेशन, द रेस्टलेसनेस, द chaos ऑफ दिस जनरेशन, where they're constantly convinced, I will not even say उनको लगता है या वो फील करते हैं, नहीं, वो actually truly fully और confidently convinced होते हैं fully and absolutely कि हम we're not working enough, ਅਸੀਂ ਉਹ सब नहीं कर रहे जो सानू करना चाहिए, we're falling behind, and what if someone gets what I want, what I am meant to do, then we're also convinced that we're never actually ever working hard. This is that system of silent anxiety, that silent pressure which we're creating for our own selves. एंड यू नो ट्रुथ बी टोल्ड ये सब क्यों होता है, क्योंकि आजकल की जो जनरेशन है ना वो एक फॉल्स नैरेटिव पे जी रही है, जहाँ उनको सिर्फ पैसों से प्यार है, ब्रांड से प्यार है, वाइब्स और एस्थेटिक से प्यार है, बट एक्चुअली ट्रूली जिंदगी जीनी नहीं है। उन्होंने शायद पता ही नहीं लाइफ विच हैप्पीनेस का मतलब क्यों होता है, एंड बिकॉज ऑफ दैट दे आर एक्चुअली चेजिंग अ ड्रीम दैट माइट नॉट एग्जिस्ट, बट दैट्स ऑल्सो बिकॉज आई फील दैट दिस जनरेशन इज नॉट सो कनेक्टेड विद स्पिरिचुअलिटी। I am just trying to tell you here that in life ਤੁਹਾਨੂੰ एक anchor चाहिए होता है, one hope, one system, one belief in which you fully trust, you with your family fully trust and believe in. And sometimes na that's where your spirituality comes in, that's where your Rabb comes in, because you need that anchor, you need that touch of grass moment in a way where you have to touch grass and realize that oh this is life, this is reality. उस रील्स की दुनिया से बाहर आके भी एक जिंदगी है, उन एस्थेटिक चीजों के बाहर भी एक जिंदगी है, एक एक्चुअल जिंदगी है जो हम जी रहे हैं, सिर्फ एक प्रिटेंस नहीं है जो हम प्रिटेंड कर रहे होते हैं। द पावर ऑफ चढ़दी कला, चढ़दी कला का मतलब है होता है दैट नो मैटर हाउ डिफिकल्ट और एडवर्स लाइफ गेट्स, we will always be in the spirit of happiness and optimism, because सानू पता है साडे कोल साडा रब है, and nothing can ever go so wrong that our Rabb will not help us or will not be able to help us. चढ़दी कला का यह मतलब नहीं होता that we are going to ignore pain या ਅਸੀਂ pretend ਕਰਾਂਗੇ कि लाइफ में कुछ गड़बड़ नहीं है, no, we will go through it all, we will go through all the challenges, difficulties and hardships that we might have to face in our life, but while going through it all ना साडे अंदर एक hope रहेगी, that everlasting hope, spirit of optimism, of positivity, knowing that we will get through it, we will get out of it. Is like a spiritual motivation. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ that no matter how difficult, challenging या फिर एक एजा सर्कमस्टेंस आ जाए where you feeling absolutely confused, ਤੁਹਾਨੂੰ पता ही नहीं आगे की करना है, किवे जाना है, you don't know इस सिचुएशन के साथ डील कैसे करना है, but being in this spirit ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ पता है जो मर्जी हो जाए मैंने पता है I will come out of this situation. No matter how difficult, challenging, you might even feel your world is going to end. इससे बड़ी प्रॉब्लम हो ही क्या सकती थी, अब मैं क्या करूँ, all my options are exhausted. But the moment you get into this space where you know मेरा रब मैंने इत्थे लेके आया है तो मेरा रब ही मैंने इधरों निकाल भी देगा, that is where everything will absolutely change for you, because that perspective changes everything you need. Because right now na everybody is very busy building a successful life, but nobody is actively working towards building a mind, a heart, a human body that can actually live that successful life. Successful the दुनिया च बथेरे लोग हैं,
But out of all of those people, there are very few people in this world who actually and truly know how to live that successful life. You need to build a human mind. You need to build your mind. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੀ ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੈ ਨਾ. You have to work on yourself that ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਮੈਂ successful ਹਾਂ but ਮੈਂ successful life ਨੂੰ enjoy ਵੀ ਤੇ ਕਰਾਂ. Not like oh goal 1 complete, goal 2, goal 3. ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ in a way you're just running after things. When will you truly stop and live and enjoy that life which you have been working so hardly towards building? That's where your spiritual motivation becomes your anchor. That is where ਤੁਹਾਡੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਸਪਿਰਿਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੇਗੀ because that is the stability you need. ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ you don't have to run towards the other thing or the next thing. ਠੀਕ ਹੈ, you have to constantly work on yourself and good आपको काम करना चाहिए. बट उस चीज़ ਨੂੰ enjoy ਵੀ ਤੇ ਕਰੋ. जब रब ਸਾਨੂੰ कुछ दे देना है, I don't think a lot of you guys go and say thank you रब. No, you are like ठीक है मैं next चीज़ करता हूँ. शुक्राना करो, उस चीज़ ਨੂੰ enjoy करो. अपने रब दे अगे जाके you don't have to always go अरदास से जाके हर वेले कुछ मंगन दी लोड़ नहीं है. बस just say thank you रब. मेरा just अपना जाके शुक्राना करो because you are blessed with so much. And that is how you will help your own self also. That is how you will also become more satisfied and happy with your life. Anchoring our ambition in Gurbani. Chalo, we've had enough discussions about success, the ambitions, how to live a complete life. But hun aa janda hai active part. How to implement this? The first thing that we all have to do is listen to his hukum. They live in his hukum. Sanu, now whenever we are working on something, we don't have to focus on the results. Don't get obsessed with the results. Don't think about, hi, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ, what if it doesn't work out? That is not your tension to take. ओ साढ़े रब ने तक लेना है, what is meant to happen for us, what is good for us will happen. You just have to focus on your efforts. ਤੁਸੀਂ ਬਸ ਆਪਣੀ मेहनत पे focus करो. Don't focus on the after effects, the what ifs, the outcomes. वो तो फिर लाइफ की नेवर एंडिंग टेंशन है. अगर उधर चले गए, उधर बैठ गए सोचने, तो फिर कोई एंड ही नहीं है. जस्ट फोकस ऑन योर एफर्ट्स. अपनी तरफों ना पूरी मेहनत करो. इनफैक्ट डू योर 101% कि खुद में कोई रिग्रेट ना रह जाए कि यार मैंने इनफ मेहनत नहीं की. स्ट्रेस पता है सानू स्ट्रेस एफर्ट्स नाल नहीं आंदा. सानू स्ट्रेस तद आंदा है व्हेन वी बिकम वेरी अटैच्ड टू द व्हाट इफ, द रिजल्ट और द आउटकम ऑफ आवर एफर्ट्स. क्योंकि जब ਅਸੀਂ मेहनत भी कर रहे हैं ना, वी आर मोर फोकस्ड ऑन आगे की होएगा, नॉट ऑन कि यार होने हले इन दिस मोमेंट आई वांट टू वर्क टू माय फुलेस्ट पोटेंशियल. एंड दैट इज हाउ यू शुड आल्सो लुक एट इट. अपनी तरफ से एफर्ट्स फुल्ली दो, फुल्ली रखो, फिर देख लेंगे आगे जो होगा. दूसरी चीज है सेवा. When we become obsessed with our ambitions, with our success, ते ਅਸੀਂ ना what do we do is that we become our ambitions. सानू अपनी आइडेंटिटी ना सिर्फ अपने एम्बिशंस विच दिखती है, अपने प्रोफेशनल सक्सेस विच दिखती है. एंड बिकॉज ऑफ ऑल ऑफ दैट वी बिकम ईगोइस्टिक क्योंकि आर आइडेंटिटी इज सो फ्रेजाइल. आज साडा प्रोफेशन है, साडा करियर है, ते वो सानू पैसा दे रहा है, दैट इज आर ईगो. इट इज सो फ्रेजाइल बिकॉज कल वो चीज़ इत्थे उत्थे हो गई, समथिंग बिकम्स लेस और इट डजंट वर्क आउट द वे इट वाज, ते वील ऑल फॉल अपार्ट. असी ते वील ब्रेक. सो व्हाट डू वी हैव टू डू? वी हैव टू कॉन्स्टेंटली डू सेवा. वी हैव टू कॉन्स्टेंटली ग्राउंड आवरसेल्व्स. Because how I said pehle also that being successful, being ambitious is a part of our life. It is not our whole complete life. No, we have to constantly ground ourselves. Sanu, always we have to stay connected with reality. That is where you also have to do seva. You have to stay connected, not because either मैं have to इसलिए नहीं बोल रही, it is a compulsion. No, it's a need for all of us. रब दी सेवा करना, रब नाल जोड़े रहना, so that we don't forget our grounding. We don't forget what actually life is. Because as I'm always saying, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਿਰਫ exist ਕਰਨ ਨਹੀਂ ਆਇਆ. We have to live life, we have to enjoy life. ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਰੱਬ ਦੀ ਰਜ਼ਾ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ. The third thing is my personal favorite, which is ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ. हर रोज ना, no matter how busy your day gets, no matter ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ occupied ਹੋ, just take out a few minutes and you can do it. अब ये सब मत बोलना यार एक नो टाइम नहीं है, रब वास्ते टाइम नहीं है. Every day just take out a few minutes of your day and remember Waheguru. बस रब दा ना लेना है. दिस इज नॉट रिलीजियस, दिस इज जस्ट अ स्पिरिचुअल रीसैट फॉर योर नर्वस सिस्टम. अपने मन को शांत करना है, अपने दिल को ये फीलिंग देनी है दैट ओ एट द एंड ऑफ द डे आई एम सैटिस्फाइड, आई एम कंटेंटेड, आई हैव रब. बस वो सिमरन करना है, जस्ट टू काम योर सेल्फ डाउन, जस्ट टू कनेक्ट विद आर रब. बस वाहिगुरु दा ना लेना है. एंड ऑल्दो आपको लग रहा होगा इतनी छोटी सी गल, बट दिस विल मेक सो मच इम्पैक्ट इन योर लाइफ. This will make you a positive person. This will completely change the way you view life, you look at life.
ਤੇ ਇਹ ਸਭ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ you will be so much more motivated to work even harder towards getting your dream life, towards building your dream life and actively building yourself also to enjoy that life that you worked so hard for. ਹੁਣ ਉਹ part ਆ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ conclude ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹਾਂ, because I've spoken about ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੇ success. So you know guys, success is not about running after one thing after the other endlessly in a way where you're constantly exhausted, drained, burnt out because you are so tired. You are not at all getting a moment with yourself. You're not able to live life. You're not able to relax at all. ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਮੋਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, because you're constantly stressed, burdened or pressurized. ਹੁਣ of course if you're working towards something, ਉਹ ਗੱਲ normal ਹੈ to take tension, to get stressed, ਉਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਲੱਗ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, but to always have that heavy feeling on your chest, or डर जा लगना that what if something gets wrong, that's not normal and that's not how it should be, because ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹੇਜੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ which is meant to give you happiness, but ਇੱਕ ਤੇ you'll never enjoy that happiness if you're so pressurized, and secondly ਜਦ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, how can we ever be stressed about it? So this is where our spirit of ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ comes in action. ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ that no matter howsoever difficult or adverse the situation is, as long as we're connected to our Rabb, as long as we abide by his hukum, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, because things will always work out. ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸੀ, but if you also believe just like me that ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਚੇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, we are building our lives, we are building our dreams, we are building our ambitious careers, then this video is for you. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ please ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ subscribe ਤੇ ਕਰਨਾ ਹੀ, and also follow me on Instagram. But remember one thing, we are not supposed to chase after things. We are just supposed to put in efforts. We're just supposed to work hard. We're just supposed to live life and enjoy it, because बाकी सब ते we will attract. ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ let me know in the comment section how did you like this video. ਤੇ I will see you soon guys, super soon in the next video. Bye guys. ਮੰਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, because ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਬੜੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, without fear, without hate. Now just imagine a life ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ resentment ਜਾਂ hate ਹੈ. A lot of you might say यार feel भी नहीं हो रहा, ऐसा imagine ही नहीं कर पा रही, क्योंकि इतना light feel करोगे ना लगेगा dream like state है. But there is only one universal reality. तो जब we also realize ना that life is one thing is and will always be connected to another thing, we will become much more peaceful in life, because ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ realize ਕਰਨੀ ਹੈ that ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, that is because ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ plan ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਤੇ ਜਦ we understand this thought ਨਾ, the moment we make peace with this thought, we start believing in him. We start believing in him in a way that ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਦੀ ਕੁਝ ਗਲਤ ਹੋਏਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, and that's when we stop fighting our anxiety or our restlessness, because ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ that there's something much bigger that's waiting for us all, building a fearless mind. Now let's think about it this way. No matter ਤੁਸੀਂ prove ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, there are certain things ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ ਤੇ they will always be with you because of who you are, because you are ancestral. Everyone, and welcome back to another interesting YouTube video. I hope you guys have been loving all the content that is being posted on the channel. ਤੇ ਬਸ channel ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਪਿਆਰ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ so that we reach 1000 subscribers super soon. आज के वीडियो में मैं ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ डिस्कस ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ about how our मूल मंत्र is actually the best thing, the best protection that we have, which can save us from anxiety. What if I tell you all that जब ਤੁਹਾਨੂੰ anxious feel ਹੋਏ, जब ਤੁਹਾਨੂੰ uncomfortable feel ਹੋਏ, ਕਦੇ-ਕਦੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ chaos ਹੈ, restlessness ਜੀ ਹੈ, then you don't need to go for some complicated methods to relax yourself. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ endless journaling ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ you don't have to do something that's very difficult, something very unusual, because the answer to all our stress, anxieties and struggles is always within us. It's always with us, because ਸਾਡੀ ਸਾਰੀ problems ਦਾ ਜਵਾਬ ਸਾਡੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ. Our ਮੂਲ ਮੰਤਰ is our sacred protection. ਤੇ no matter how stressed you are, how anxious you are, how worried you are, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ overthink ਕਰ ਲਓ, ਬਸ ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, and that will always protect us. Because in today's video ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸੀ ਗੱਲ ਦੀ discussion ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ, how our ਮੂਲ ਮੰਤਰ can save us from anxiety. तो चलो on that note, let's begin watching guys.
chaos of modern hustle. Now let's be honest, ਅਸੀਂ ਜਿਨ times ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, these are one of the most chaotic times ever. ਅਸੀਂ ਕਦੀ, we are never peaceful. I wouldn't even say we're never peaceful, but we're never at peace with ourselves 100%. ਸਾਨੂੰ always ਇਹਨਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਂਜ਼ਾਈਟੀ ਫੀਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਤੇ ਇਹੀ ਹੈ that we're living in the time of social media. Constantly notifications आंदी जांदियां रहंदियां, and we have such a big access to everyone's lives that we are at some point or the other forced to compare ourselves with them. Forced not because हम करना चाहते हैं या कोई हमें कह रहा है करने को, nothing like that, but होता की है, we view their stories, we view their achievements और देख के लगता है when will my time come? मेरे साथ ऐसा क्यों नहीं हो रहा? मैं तो इससे ज्यादा मेहनत कर रही हूँ, मेरे नाल तो ये गल्ला हो ही नहीं रही. And because of this, सानू anxious feel होता है, सानू chaotic feel होता है, सानू restless feel होता है, ਅਸੀਂ overthink करने, and we overthink about everything. ਸਾਡੇ future ਲਈ, about if we are even working hard enough, about what it is that we are doing wrong, and if we are actually even doing anything right. What if I tell you that this anxiety that you're feeling now, it's not your enemy, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਹੀਂ ਹੈ, but this is just like a temporary phase ਜੋ ਆਇਆ ਤੇ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ uncomfortable ਤੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, but it is making us realize something. ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਏਕਯੁਮਕਾਰ. ਏਕਯੁਮਕਾਰ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? that there is only one universal reality. ਤੇ ਜਦ we also realize ਨਾ that life is one thing is and will always be connected to another thing, we will become much more peaceful in life. Because ਸਾਨੂੰ ਬਸ ਇਹ ਗੱਲ realize ਕਰਨੀ ਹੈ that ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, that is because ਉਸ ਰੱਬ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ plan ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. Jad we understand this thought now, the moment we make peace with this thought, we start believing in him. We start believing in him in a way that sanu pata hai sade naal kadi kuch galat hoega hi nahi, and that's when we stop fighting our anxiety or our restlessness, because sanu pata hai that there's something much bigger that's waiting for us all, building a fearless mind. Now let's think about it this way. If I ask you all कि ਤੁਹਾਡੀ anxiety ਦਾ source ਤੁਹਾਡਾ fear ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ, a lot of you will say that yes Iknoor, actually ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ times I get anxious because I am fearful about something. ਮੈਨੂੰ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, but ਇਹ ਡਰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ. This is the fear of rejection, fear of not being wanted, fear of judgment. ਇਹ ਸਾਰੇ fears ਆ ਕੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ anxious feel ਕਰਾਉਂਦੇ ਆ, because we are constantly feeling that we're not doing enough. We constantly feel that what if life ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਕੋਈ opportunity ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ because we are just not enough. But ਇੱਥੇ again ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, because ਸਾਡਾ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਸਾਨੂੰ ਦੋ ਬੜੀ important ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ. ਨਿਰਭਉ, ਨਿਰਵੈਰ, without fear, without hate. Now just imagine a life ਜਿੱਥੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਡਰ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਲਈ ਕੋਈ resentment ਜਾਂ hate ਹੈ. A lot of you might say यार feel भी नहीं हो रहा, ऐसा imagine ही नहीं कर पा रही, क्योंकि इतना light feel करोगे ना लगेगा dream like state है. But that is exactly when we're unlocking our power, because ना सानू कोई परेशान कर रहा है, not because वो सानू परेशान नहीं करना चाहते, but because we are so emotionally stable. सानू किसी गल दा डर नहीं ते किसी इंसान तो कोई परेशानी वाली गल भी नहीं लगती. Imagine you become so emotionally stable that you become mentally free. Why is this happening? Why does this happen? That's because hun tusi react nahi kar rahe. You are not constantly emotionally reacting to others. You are not constantly overthinking every interaction. हर गल बार बार अपनी mind में replay करके तुसी judge नहीं कर रहे या कोशिश नहीं कर रहे समझने दी कि what went wrong and if actually anything went wrong. ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ free ਹੋ, ਤੁਸੀਂ emotionally stable ਹੋ, you've come back to your power. ਤੁਹਾਨੂੰ realize ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ that ਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ. And that's how you start your journey of becoming mentally free. They're also very stable and strong. So guys, before I go again, the one thing sada mool mantra sanu sikhanda hai na, is that if we actually truly feel every word of our mool mantra na, you will realize that after so many years, pata nahi kinne dina baad, your mind is feeling lighter. You're feeling so much more free than you've ever felt before. Tonu pata hi nahi eh feeling bhi hondi si. But that is what being close to Rab, being close to Waheguru does to us. ਸਾਨੂੰ ਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, not because ਡਰ ਦੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, but because ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਹੈ ਤੇ no matter ਕੁਝ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਡਾ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ. Escaping the pressure,
Now, the one emotion that I've been talking about in this video and also in my other video, जो तुसी नहीं देखा थे, please इनू तक्कन तो बाद उन्हें भी जाके जरूर देखना, is that I have constantly spoken about pressure. That how the times that we're living in, the society that we're living in, सानू एक pressure हमेशा feel होता है. Now, किस गल दा pressure है? Pressure to be successful, pressure to keep up, pressure to prove ourselves, pressure to ensure कि ऐसा कुछ ना हो जाए दैट सोसाइटी आगे चली जाए तो असी पीछे रह जाइए. मतलब these are all the pressures that surround us, and the thing about these pressure guys is that they are never ending. ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਅਚੀਵ ਕਰ ਲੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਟ੍ਰੈਸ ਜਾਂ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਬਿਕੋਜ਼ देयर आर so many things that are needed to be done to be achieved. ਤੇ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ, timeless existence, which makes us realize this, that we are not just about our productivity, we're not just about our timelines, deadlines, ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿੰਨੇ ਅਵਾਰਡ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ. No, ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਹੈ that we are above and beyond these things. Life ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, but just being productive is not everything. ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, your relationship with God, how clean your karma is, how true your intentions are, ਉਹ ਸਭ ਵੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਉਨੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਰੱਖਦੇ ਨੇ. ਅਕਾਲ ਮੂਰਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਅਜੂਨੀ ਸਹਿਬੰਗ. ਅਜੂਨੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ not bound by birth, ਤੇ ਸਹਿਬੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ self existent, which means that there are certain things in our life that ਸਾਨੂੰ earn ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਲਈ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ, because we are born with it. ਉਹ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਨ. We exist and they exist. And the moment ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲਾਂ realize ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, the moment you realize that there are certain things that we will get just because of who we are, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀਆਂ, that's where a huge part of your anxiety will disappear. That's where ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਜੀ relaxation feel ਹੋਏਗੀ, because you will realize ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ to prove yourself to the society every single day. Because no matter ਤੁਸੀਂ prove ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, there are certain things ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹਨ, that they will always be with you because of who you are, because you are absolutely made by them. They are within you. The realization shifts. Now aa janda hai oh moment where everything shifts. This sanu ek extremely important realization hondi hai, which is gur prasad, jida matlab hunda hai realization through grace. अचानक ना when you're building this connection, जब तुसी अपना मूल मंत्र feel कर रहे हो, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ realize ਹੁੰਦਾ ਹੈ it's not only about what the intellectuals are saying, what the intelligent part of your brain wants to think or believe, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਕੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ, something within you shifts ਤੇ ਤੁਸੀਂ feel ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ. ਅੰਦਰੋਂ you feel very ਸ਼ਾਂਤ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਸਕੂਨ ਜਿਹਾ feel ਹੁੰਦਾ ਹੈ, you get a lot of clarity because something has truly changed within you and it has changed for the better. Now what do you have to do? ਇੱਕ realization ਤੇ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ that my thoughts are not controlling me anymore. But ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ you don't have to, I will not say, oh, go to the mountains, live a disconnected life. ਨਹੀਂ, ਐਸਾ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ. All you need to do is ਜੋ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਅਸੀਂ ਕਰਨੇ ਆ, ਜੋ ਪਾਠ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ practically ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ in a way that ਸਾਡਾ nervous system train ਹੋ ਗਿਆ that ਮੂਲ ਮੰਤਰ is always our guiding force. ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, you're walking, you're meditating, you're working out, you're working, your ਮੂਲ ਮੰਤਰ is always being played within you. And ਧੀਰੇ ਧੀਰੇ ਦੇਖਣਾ how stressless your life becomes. ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ stress ਦਾ relationship ਨਾ ਇੱਕਦਮ long distance ਹੋ ਜਾਏਗਾ, because you will feel very very less stressed and so much more at peace with yourself. ਤੇ the one thing you will feel definitely is you will feel way more in control of your life and the things that are happening in it. Training our mind. ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ final step, which is ਜਾਪ, continuous remembrance. That is, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੇਲੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ you have to do it when you are stressed, anxious, ਜਾਂ ਹੁਣ ਚਲੋ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਗਈ ਹੈ. ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਕਿਹਾ, we have to make the ਮੂਲ ਮੰਤਰ a part of who we are, that it is always playing within us. It becomes a guiding force. ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਨਰਵਸ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਲੈਣਾ ਹੈ that nothing should happen for you to do it, because it is already being played within you. It has become your default force. It has in a way become your default setting that जो मर्जी हो जाए, एक मूल मंत्र करना, दो मूल मंत्र करना, countless मूल मंत्र करना become a part of who you are. Because ਹੁਣ this मूल मंत्र will make us feel very very calm, secured and protected. So guys, trust me when I say this, that if you actually truly do it na,
ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ worried, anxious, chaotic ਜਾਂ restless feel ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, because you know what your energy will be, how you will always constantly feel. You will always feel calm, secured, grounded and protected. मैं ਇਹ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ इसलिए कर रही ਹਾਂ because सच में we make our brain work in such a way, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ train ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ that we start believing these things. We believe in them with so much faith that they actually become our life and our true reality. ਤੇ ਹੁਣ the next step is that ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ anxious feel ਹੋਏ ਤੇ ਜੇ ਨਾ ਵੀ feel ਹੋਏ, all you have to do every time, this has to be a grounding exercise that you have to do, it becomes a part of who you are, is that take a pause ਤੇ ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਕਰੋ ਤੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਰਹੋ till it becomes a part of who you are. And trust me when I say this, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣਾ that when our ਮੂਲ ਮੰਤਰ actually starts residing within us, because ਸਾਡੇ ਰੱਬ ਨੇ ਨਾ, he has made us all peaceful only. He has made us all realize this fact that we are meant to live in a state of sukoon. बस सानू उस सुकून नू जीना आना चाहिए है. ते मूल मंत्र करो, रब दे नाल जुड़े रहो, because साडी गुरबानी है, साडे रब कोल he has the solutions to anything and everything. So I hope आज दा वीडियो तुहानू अच्छा लग्या होए. जान तो पहले प्लीज सब्सक्राइब करो ते मैनू इंस्टाग्राम ते फॉलो करो. I will see you guys super soon. Bye guys. सत श्री अकाल everyone and welcome back to another interesting YouTube video. आज दे वीडियो का टॉपिक होने लगा है super relatable but also so relevant in the times that we are living today, because in today's video मैं गल करन लगी हां about what Gurbani teaches us about relationships that time will never tell us. Now sometimes na log, you know, they have this thinking that time will heal the relationships, time is the best healer, but the one thing guys is that time हर चीज नहीं कर सकता. ਤੁਸੀਂ ਕਿਨੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਨੇ ਕਨੈਕਟਡ ਹੋ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ. Because sometimes na guys, you can be with a person for years, you can know them even for a decade, but still you might never understand each other's souls. But कभी कभी क्या होता है, कभी कभी we meet someone and they understand us, they make us feel in a very different way. ऐसा लगता है that time ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ, but the way they've made you feel, it's something different, ਕੁਝ तो अलग सा feel होता है. So the real question is not about ਤੁਸੀਂ किसी ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, it's not about how long you've known someone, it's actually about how have both of you grown together as a unit. The deception of the calendar. I think एक ना false sense of security हो जाती है when you look at time as an indicator of how successful a relationship is or is not. There's sometimes ना people say that oh यार नु 10 साल हो गए, we've been together for 5 years. They automatically assume, या फिर the society has conditioned them to assume or believe that जे तुसी किसी दे नाल इन्ना time रुकी गए हो, रह ही चुके हो, then that marriage or that relationship is successful. But guys पता है बहुत बार की होता है, people, relationships में couples, they stay together for years, even up till decades, but होंदा की है, after a while ना, they don't feel connected in the way they should be, what they should feel if they are connected to each other in a, तुसी कह लो, in a spiritual way or in an emotional way also. धीरे धीरे की होंदा है, एक आदत जी हो जाती है. आदत in terms of they start living together as roommates, responsibilities share करते हैं, खर्चे बांट लेते हैं, and that's the way they live life. एक coexistence जी आ जाती है पूरी state. It's not the connection that should be there. And the moment ना in any relationship एक couple is जब spiritual connection नहीं होता ना, then you tend to question that what is this even. But sometimes ना this illusion, this false illusion that time creates ना, वो सब नु convince कर देता है that oh yes, this is a very happy relationship, this is a very successful relationship, because time एक false sense of security दे देता है that इन्ने साल हो गए, आगे भी time निकल ही जाएगा, time तो निकल ही जाएगा. But we as humans, you are not supposed to just coexist with your partner. तुसी, you know, you guys have to share a spiritual connection. एक एजी feeling that रब ने ए इंसान मेरे लिए ही बनाया है, वो spiritual connection होना बहुत ज़रूरी है. तो एक्चुअली ना जब थोड़ा पर्सपेक्टिव शिफ्ट हो जाता है फ्रॉम हाउ लॉन्ग वी हैव बीन टुगेदर टू हाउ बोथ ऑफ अस हैव इवॉल्व्ड सिंस वी हैव बीन टुगेदर, दैट विल टोटली चेंज द वे जिस तरह तुसी रिलेशनशिप्स नू व्यू करते हो, जिस तरह तुसी लव नू व्यू करते हो. गुरबानी एज आर मिरर इन टाइम्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट.
यू नो गाइज मैं ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਹਾਂ ਉਹ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ फाइट्स है वो तो बड़ा प्रॉब्लमैटिक है बिकॉज आई पर्सनली बिलीव दैट जिस रिलेशनशिप में जिस कपल में फाइट होती है वो एक्चुअली हेल्दी और सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स हैं क्योंकि अगर जे तुसी किसी दे नाल फाइट कर रहे हो दैट्स बिकॉज तुहानू उस बंदे तो कोई होप है कोई एक्सपेक्टेशन है तो एक लाइफ जिहदे यू नो यू डोंट हैव एनी एक्सपेक्टेशन आउट ऑफ योर पार्टनर इज दैट इवन अ हेल्दी रिलेशनशिप प्रॉब्लम ए नहीं है कि तुसी दोनों आपस में यू नो यू गाइज आर फाइटिंग और समथिंग लाइक दैट प्रॉब्लम ए बिल्कुल भी नहीं है प्रॉब्लम है दैट योर पर्सपेक्टिव टूवर्ड्स दैट कॉन्फ्लिक्ट दैट आर्ग्यूमेंट दैट फाइट इज अ लिटिल बिट मिसजज्ड ओके बिकॉज प्रॉब्लम क्या होती है दैट वी फोकस ऑन कि लड़ाई हुई क्यों है वी डोंट फोकस ऑन कि ए लड़ाई मैंने अपने बारे च की दस रही है because sada na what is our best thing as humans is our favorite thing rather as humans to do is that ਅਸੀਂ we just want to find the fault in the other person ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਕੀ ਗਲਤੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਫੋਕਸ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਈਗੋ ਹੈ ਜੋ ਕੁੱਟ ਕੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ we don't want to accept our faults we don't want to accept our mistakes ਸਾਡੀ ਈਗੋ you know what will it make us do that it will make us defend ourselves prove ourselves right and blame the other person बट एक्चुअली साडी गुरबानी ते सानू ਇਹ सिखाती है दैट लाइफ में जब कोई कॉन्फ्लिक्ट या फाइट है ना तुसी दूजे बंदे बारे नहीं सोचना तुसी अपने बारे सोचना है यू हैव टू इंटरनली रिफ्लैक्ट ऑन योर सैल्फ ते तुसी सोचना है दैट वॉट इज दिस सिचुएशन ट्राइंग टू टीच मी ए फाइट्स ए मिसअंडरस्टैंडिंग्स ए कॉन्फ्लिक्ट्स मैन की सिखाना चाह रहे हैं यू हैव टू फोकस ऑन दैट यू डोंट हैव टू फोकस ऑन इस बंदे लिए ना मैंने इंज फील हो रहा है इन्हें मैनू ए कह दिता नो you have to focus on that okay what is this fight what is this conflict trying to teach me about myself ਤੇ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਜੀ ਗੱਲ ਦਾ ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਕਿਉਂ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੈ because our Gurbani teaches us that ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਰੁਕ ਜਾਓ ਸਾਹ ਲਓ ਤੇ then ਸਮਝੋ the entire situation ਕਿ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਲਈ you know you think about any situation with your ਰੱਬ in your mind ਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਕੇ तब एक मोमेंट आता है जब सान रियलाइज होता है दैट ओके माई पार्टनर इज ऑल्सो इन दिस रिलेशनशिप इन एन इक्वल कैपेसिटी वो भी इस रिलेशनशिप में बचाना ही चाहता है मे बी उसका परसपैक्टिव तो तरीका अलग है बिकॉज गाइज द मोमेंट तुसी अगर रियलाइज कर लेंदे हो ना दैट वी आर ऑल हिज चिल्ड्रन सानू सब नू रब ने ही बनाया है तां व्हाट हैपन्स इज दैट वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग हिज डिवाइन पर्पस that changes the entire perspective and the way you view your partner because hun na your focus is not कि मैंने लड़ाई जितनी है नहीं it's not even कि मैंने इस argument इस सही proof होना है नहीं you realize कि जिस रब ने सानू बनाया है ते उसी रब ने सानू मिलवा भी दिता है that means we are meant to be together ते जब तुसी उस divine light दी blessing विच अपने partner नू view करना start कर देंदे हो ना that's when everything changes and that's when you see your relationship as one of the biggest blessings of your life practicing deliberate presence ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ deliberate presence ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ that ਤੁਸੀਂ ਜਾਣ ਕੇ you're actively trying everything and actively actually being there in your relationship not just physically but mentally spiritually emotionally and in any and every way that exists out there ਹੁਣ ਗਾਇਸ ਪਰਸਨਲੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਨਾ दैट रिलेशनशिप्स डोंट एंड बिकॉज कोई एक वड्डी जी प्रॉब्लम हो जाती है दैट्स द एंड ऑफ इट ऑल ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस होंदे ऐसे सिचुएशंस भी यू नो आती होंगी लोगों की लाइफ में दैट्स देयर बट होंदा की है दैट स्मॉल थिंग्स होंदियां स्मॉल मोमेंट्स ऑफ डिसकनैक्शंस ते जद असीं ਇਹ स्मॉल प्रॉब्लम्स ਨੂੰ